Jajana, Jashram, Tridet, Priya, Bhumika, Rudra, Shraddha Snigdha, Gayatri, Sasmita, Jagya Seni, 32 watching. इतने अधिक वाचिंग 45 जग्या सेनी 32 तो आ पांच जण स्टार्ट करिया बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन अछि फर्स्ट रू जेहेतु बायोटेक्नोलॉजी हमें बहुत दिन हेलानी करि नथिले दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी रो क्वेश्चन तो रेगुलर बेसिस रे करूचे एंड आल्सो हमें दैट इज हेल्थ रो क्वेश्चन करूचे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रो क्वेश्चन करूचे सो बायोलॉजिकल दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन हम बहुत दिन हेलानी करू नथिले सो हम बायोटेक्नोलॉजी रो क्वेश्चन स्टार्ट करिया सर नून रे लाइव क्लास केते बड होची नून रे लाइव क्लास केते बड होची होची 12 टा रे नून रे बे क्लास होनी प्रभु बट इवनिंग रे होची सब बड पे 6 टा रो स्टार्ट होची लाइव क्लास ओके चलो स्टार्ट करिया सौदामिनी गुड इवनिंग एवरीवन चलो प्रथम क्वेश्चन तुम पाखे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस बढ़िया क्वेश्चन जनरली बायोटेक्नोलॉजी जोटा के डील्स करूची विथ टेक्निक ऑफ यूजिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड प्रोसेस यूजफुल टू ह्यूमंस कोन हो डी आमे जानिछे व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी दैट मींस दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनसाइड द बायोलॉजी बा बायोलॉजी रे हमें टेक्नोलॉजी को ऐड करिया फॉर द प्रॉफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बा हमें बायोटेक्नोलॉजी प्रोसीजर रे एम्ति किछि गोटे प्रोडक्शन बाहर करिया जोटा कि ह्यूमन बीइंग्स रो पई प्रॉफिट हेबो बा हमें बायोलॉजी रे टेक्निक को ऐड करिया तो फॉर द एंजाइम फॉर्मेशन हेई पारू एंड फॉर द विटामिन फॉर्मेशन पई हेई थई पारू ना लाइव ऑर्गेनिज्म हेई थई पारू जदि हमें देखिबा बोथ ए एंड बी विटामिन नो बोथ ए एंड बी सो आंसर अब डी ठीक अछि तो दिस इज द बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ तापर को बायोटेक्नोलॉजी मेनली यूज जीएमओ दैट मींस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया एनिमल्स वायरस बायोटेक्नोलॉजी ता मोस्टली काहा को यूज करे कोन हो genetically modified organism okay जदि हमें देखिया द बायोटेक्नोलॉजी मेनली यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म ना बैक्टीरिया बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली यूज हुए कोन मेनली यूज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म चलो सिलेक्ट द प्रोसेस एंड टेक्निक select the process and technique include under biotechnology under रे को प्रोसेस बा टेक्निक ता इंक्लूड अछि आईवीएफ डेवलपिंग डीएनए वैक्सीन जीन सिंथेसिस ना ऑल ऑफ दिस देन तापर मते को कि जनरली आंसर कोआ कोन हबो 74 वाचिंग समस्त आंसर ठीक अछि आई थिंक सस्मिता डी राइट जनरली प्रोसेस बा टेक्निक इंक्लूडेड अंडर द बायोटेक्नोलॉजी ऑल ऑफ दिस मते को कि जनरली व्हाट आर द टू प्रिंसिपल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी व्हाट आर द टू principle of the biotechnology two principles of biotechnology according to NCERT what are the two principle of biotechnology कोन कोन दीटा प्रिंसिपल मु गोटे प्रिंसिपल तुम कहि दोची गोटे होची जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गोटे को one is genetic engineering and another one anyone the two principle of biotechnology genetic engineering and bioprocess engineering amazing कृष्ण बढ़िया that is genetic engineering and bioprocess engineering right तो मते को कि जनरली जेनेटिक इंजीनियरिंग कहिला में एया बुझिबा जो जीन लेवल रे हमें चेंजेस करछे बा जीन को अल्टर करछे बा कोनसी ऑर्गेनिज्म रो जीन को मैनिपुलेट करछे तो जो जीन लेवल रे छेड़छाड़ करछे दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग कोन बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग बा हमें जो भी जीन को नेकी चेंज करछे तो गोटे कोन करछे बॉडी रो बाहर करछे ऑब्वियसली जनक बॉडी रो हमें जीन को आनिया माने केमिति आनिया जीन को जनक बॉडी रो आनिया माने दैट इज आगो फर्स्ट सेल को आनिबा तो दैट इज सेल को आनी करी गोटे मीडियम को आनिबा देन सेल भीतर तार न्यूक्लियस को जिबा न्यूक्लियस भीतर दैट इज डीएनए पाकू जिबा देन डीएनए रो सेगमेंट को कट करिया तो एई सब प्रोसेस बॉडी रो बाहर होउची राइट एंड बॉडी रो बाहर होउची बा एक्सटर्नल मीडियम रो होउची एक्सटर्नल मीडियम को हमें स्टेरिलाइजेशन करबा बा स्टेराइल कंडीशन रखिबा स्टेराइल कंडीशन माने कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोनोसी बैक्टीरियल इंफेक्शन पूरा क्लीन कंडीशन नबा दैट इज कॉल्ड एज बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग so two principle of biotechnology that is
One is genetic engineering and another one is bioprocess engineering. Orjita perfect. And genetic engineering that is कौन ना जो gene level रे जो हमें changes करछे that is called genetic engineering. And gene level रे जो changes करिया पई हमें जो medium नौचे बा external medium नौचे जो तरह के cell भितर हमें cell भितर को nucleus को जाउचे nucleus भितर DNA RNA प्रोटीन या भितर DNA को सेपरेट करछे ए सब जो बॉडी रो बाहर बा गोटे मीडियम रे करछे तो गोटे स्टेराइल मीडियम नबा that is called as bioprocess engineering. Perfect. Then मते जो तुमको एडी यदि क्वेश्चन पचारे फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रो प्रथम स्टेप कोन ऑप्शन दोची व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन 1 फॉर यू आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेकंड जो देखिबा दैट इज द सेपरेशन ऑफ डीएनए फर्स्ट स्टेप मते को देन जो देखिबा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ट्रांसफर टू द होस्ट फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रो प्रथम स्टेप कोन प्रथम स्टेप तुम कोन करियर अछि सिलेक्शन ऑफ डिजायर जीन ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डीएनए सर प्रोनाम एंजल क्यूटी राइट तो फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आइसोलेशन ऑफ डीएनए यू हैव टू रिमेंबर तुमको बायोटेक्नोलॉजी करिया को हेले आगे कोन डीएनए को आइसोलेट करिवो सेल भितरु डीएनए को रिमूव करिवो तो सेल भितरु डीएनए को रिमूव करिया पई फॉर एग्जांपल दिस इज द सेल एंड मते को कि सपोज एटा गोटे प्लांट सेल हैला एंड प्लांट सेल रो डीएनए को तमे रिमूव करिवो तो प्लांट सेल रो डीएनए को रिमूव करे पई फॉर एग्जांपल तमे प्लांट सेल रो आगो कोन सेल वाल को डाइजेस्ट करिवो मते को कि प्लांट रो सेल वाल को डाइजेस्ट करे पई को एंजाइम यूज करा जिवो यार आंसर होचे आइसोलेशन कोन हो सेलुलोज सेलुलेज ना काइटिनेज ना लाइसोजाइम व्हिच एंजाइम generally used for the digestion of cell wall of the plant cell रो cell wall को digestion करिया पई generally कोन यूज करा जाय कोन हो yes तुम that is cellulase and हम जानि छे प्रथमे cellulose देन हमें आइसोलेशन ऑफ डीएनए करे पे आगो कोन न्यूक्लियस को जे हम जानि छे सेल भीतर न्यूक्लियस भीतर क्रोमोसोम सो जनरली हम न्यूक्लियस भीतर को जीवा पई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी डाइजेस्ट करे रची एंड टू डाइजेस्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द एंजाइम यूज दैट इज कॉल्ड एज who can say to digest the nuclear membrane को डाइजेस्ट करिया में को एंजाइम रो यूज करा जाय कोन हो बैक्टीरिया सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया में लाइसोजाइम प्लांट सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया में सेलुलेज फंगी रो सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया में काइटिनेज एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करिया में न्यूक्लियस एंड राइट आंसर न्यूक्लियस तो बर्तमान हमें सेल वॉल को डाइजेस्ट करके सेल भीतर एंट्री कले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करी न्यूक्लियर भीतर एंट्री कले न्यूक्लियस भीतर सपोज एटा होची डीएनए एंड सपोज एटा होची सपोज डीएनए एंड सपोज एटा होची आरएनए एंड सपोज होची प्रोटीन तो जनरली हमर कोन दरकार डीएनए एई जिंसटा हम दरकार तो फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए हमकु कोन करिया रची ना आरएनए आ प्रोटीन को रिमूव करिया रची तो मते को कि for the digestion of RNA coenzyme दरकार and for the digestion of protein coenzyme दरकार anyone RNA और प्रोटीन को सेपरेट करे पे कौन कौन दरकार है that is first step of biotechnology isolation of DNA रे हमको जीवा पई हेले फर्स्ट हम सेल वॉल को डाइजेस्ट करिया देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करिवा देन RNA एंड द प्रोटीन को डाइजेस्ट करिवा सो RNA को डाइजेस्ट करे पे RNAs बा राइबो न्यूक्लियस कहि परिया प्रोटीन को डाइजेस्ट करे पई प्रोटीएज ठीक अछि देन हमें पाया कोन ना दैट इज द डिजाइडिन देन मते को कि मॉलिक्यूलर सीजर कहा को हमें मॉलिक्यूलर सीजर बोली कहया जो डीएनए हमर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट बा डिजायर जीन को पाया पई हमें दैट इज जो डीएनए रो सेगमेंट बा हमें कथि कहिबा गोटे पार्ट को काटिया पई हमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करिया तो जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को कहा जाय मॉलिक्यूलर सीजर ओके बा मॉलिक्यूलर ब्लेड बोली भी कहि परिया मते को कि जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम केमिति प्रोडक्शन हुए एनीवन हाउ द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड एनीवन तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एटा लास्ट क्वेश्चन 10th रे 91 12th रे 71 91 71 2 देन हम जो देखिबा 6 divided by 2
एवरेज होची 81%। सो 81% माने नियत तुमको रखिया पड़ो 150 रो 155 प्लस। चलो नेक्स्ट कोन हबो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होची कोन बेसिकली जेतेबेले हमें जानिछे सपोज दिस इज ए बैक्टीरियोफेज एंड बैक्टीरियोफेज कोन बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस वायरस आमे कहि पेरा बैक्टीरियोफेज इज ए virus which will affect the bacteria suppose it is bacteria तो जनरली बैक्टीरियोफेज बा जो वायरस टा बैक्टीरिया को अटैक करे तो जेतेबेले तार निजर डीएनए टा बैक्टीरिया बॉडी को एंट्री करे बैक्टीरिया वायरल रो डीएनए को मारिया पई बा निजु को वायरल डीएनए थारु बंचिया पई गोटे एंजाइम प्रोडक्शन करे बा वायरल डीएनए को रेस्ट्रिक्ट करिया पई जो एंजाइम प्रोडक्शन करे दैट इज कॉल्ड एज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ईएफबी ईएफबी अनुसार कोटा ट्रू एंड ईएफबी रो फुल फॉर्म होची यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ईएफबी कोन हबो अकॉर्डिंग टू ईएफबी बायोटेक्नोलॉजी रो जनरली कोटा को हमें कहि परिया that is true about the biotechnology. It includes the traditional view, it includes the modern molecular biotechnology. Biotechnology कौन बोली जनरली जो EFB रहला यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो सी कौन कला ना गोटे डेफिनेशन देला व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी तो सी से डेफिनेशन रे कौन कला जनरली ट्रेडिशनल व्यू को नेला मॉडर्न व्यू को भी नेची एंड डेफिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस and the organism को natural science and organism को integration करिया cells parts thereof and molecular analogues for the product and service generally natural science and organism by cell एमान केस रे modify कराइबा for the product and service तो all of the above ठीक अछि। which of the following can be biotechnological product आंक भितर कोउटा गोटे बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट हेई परिवो एंटीबायोटिक्स हेई परिवो एंजाइम हेई परिवो वैक्सीन हेई परिवो नै दैट इज ऑल ऑफ द अबव हेई परिवो कौन आंसर 80 माने तमर ओम प्रकाश 80 माने एवरेज 80 माने तो अप्रोक्सीमेटली तुमको सही 155 प्लस। चलो ऑल ऑफ द अबव राइट। जदि हमें कहिया जनरली कहलो मते कहलो एटा ଗୋଟେ क्वेश्चन अछि एनसेट रे जदि हम देखिबा जनरली एंटीबायोटिक को यूज करिकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को यूज करिकि को दि जण साइंटिस्ट नोबेल प्राइज पाइतले बा वर्ल्ड वार 2 समय रे वर्ल्ड वार ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार 2 हु आर द टू साइंटिस्ट जे कि नोबेल प्राइज पाइतले अमेरिकन सोल्जर माने जेतेबेले दैट इज वर्ल्ड वार 2 में क्षति होतले तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को यूज करते फॉर द क्योर ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स तो सही केस रे जनरली को दि जण साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलितला एडवर्ड जेनर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नो को दि जण साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलितला चेन एंड फ्लोरी अमेजिंग कृष्ण बढ़िया दि जण साइंटिस्ट थिले जे कि पेनिसिलिन को यूज करते अमेरिकन सोल्जर माने जेतेबेले वर्ल्ड वार 2 हेतला केबे दैट इज जो देखिबा 1939 रु 1945 तो वर्ल्ड वार 2 समय रे अमेरिका मानकर सोल्जर को क्षत विकृत शरीर को भलो करे पई पेनिसिलिन को यूज करथिले के साइंटिस्ट फ्लोरी एंड चेन सो आंसर इज फ्लोरी एंड चेन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जदि कहबा से होची प्रथम एंटीबायोटिक बाहर करथिले फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग जेनेटिक इंजीनियरिंग includes the technique देखो कौन बा आंसर सिलेक्ट द फॉर स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग जेनेटिक इंजीनियरिंग includes technique to alter chemistry of genetic material DNA RNA sexual reproduction organism more advantageous than the asexual ठीक अछि। genetic engineering allows all us to introduce the desirable set of genes without the unwanted genes into the target organism plasmid is autonomous replicating linear extra chromosomal DNA बढ़िया ए तुम आंसर पूरा आसी जाउतो 6 नंबर क्वेश्चन कोन हबो एते कम पिला कोन 60 गुड इवनिंग स्टेटस हाउस नीतीश संजुला त्रिदेव ओआरआई डी 60 राइट कोन हबो 6 नंबर आंसर होची डी दैट इज हम जानि छे प्लाज्मिड इज एन ऑटोनोम प्लाज्मिड होची कोन गोटे बैक्टीरिया रो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल
Plasmid is an extra chromosomal circular double stranded DNA ହେଲା circular not linear. So answer होची linear देची, so एटा ही भूल. तो D option is correct. Then multiplication of alien DNA in organism requires generally गोटे alien piece of DNA बा gene of interest बा DGR gene generally गोटे organism भितर multiplication हबा पई कोन दरकार. अमाजिन कृष्ण मृत्युंजय प्रभु प्रभु प्रीतम लास्ट को पचारियो प्लीज. जहाँ भी जार क्वेश्चन अच्छे लास्ट को पचारिबो ए जो तुम केते मार्क रखिले कोन हबो एंड भलसे ताको हम सॉल्व करिया हला. लास्ट 5 मिनिट पूरा बढ़िया से मु तुम टाइम देबी केते परसेंटेज तुम पचार जो 10th रे प्लस 2 रे सो से रिलेटेड तुम डाउट क्लियर करबी. डोंट वरी. चलो आंसर कोन हबो ओरी origin of replication. नेक्स्ट दिबा we can cut the DNA with the help of generally which of the following option is used to cut the DNA बा molecular blade का को जाय बा molecular scissor का को जाय कोन हबो. नहीं त्रिदेव मु तमरो आंसर दे कि जीवी. डोंट वरी. लास्ट 3 to 4 मिनिट 100% तुम आंसर देबी. चलो कोन हबो आंसर दैट इज molecular scissor is called as restriction enzyme. तो मते एट जति क्वेश्चन तुम पचारे जीवो जनरली फास्ट restriction enzyme किए according to NCERT फास्ट restriction enzyme किए ऑप्शन मु तुम दउची. प्रथम restriction enzyme किए Hind2 EcoR1 ना that is BAM-HI. which one is the fast restriction enzyme? प्रथम restriction enzyme किए कोन आंसर Hind2. परफेक्ट. देन मते को कि Hind2 जनरली को बैक्टीरिया रु डिस्कवर कराई छी. Hind2 इज डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हिच बैक्टीरिया. को आंसर कोन हबो Hind2 इज डिस्कवर्ड फ्रॉम व्हिच बैक्टीरिया. आई थिंक समस्त को आसीबो. Hind2 इज डिस्कवर्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया Haemophilus Salmonella typhi नुह. जनरली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मानकर नामकरण करा जाए केमिति ना जो बैक्टीरिया रो से माने आसंती. Hind2 इज ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जहार नेमिंग करा जाए दैट इज को बैक्टीरिया आसीची Haemophilus influenza. सो Haemophilus influenza नामक बैक्टीरिया रो आसीची एंड जनरली नामकरण केमिति करा जाए Haemophilus is the genus and influenza is the species. Then genus रो फर्स्ट लेटर H, species रो फर्स्ट थीटा लेटर in, then होची D होची strain of the bacteria, then 2 होची number of strain. तो एई भले भाग रे करा जाए. सो Haemophilus influenza. चलो Haemophilus influenza बैक्टीरिया रो आसी. चलो सेम जो देखिबा EcoR1 को बैक्टीरिया रो एनीवन को कि जनरली EcoR1 from the which bacteria or the enzyme restriction enzyme EcoR1 is discovered by the which bacteria. कोन हबो बढ़िया अछि समस्तिंकर. श्रद्धा स्निग्धा सस्मिता त्रिदेव प्रीति जोस्ना राजेश मृत्युंजय निशिकांत कृष्ण रोहन शुभस्मिता मंजरी. चलो मृत्युंजय इकोली राइट. इस्चेरिया कोलाई. तो जनरली इस्चेरिया कोलाई तो आम जानी इस्चेरिया कोलाई भितर इस्चेरिया जीनस कोलाइटा होची स्पेसीज एंड जीनस रो फर्स्ट लेटर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो प्रथम लेटरटा जीनस रो फर्स्ट लेटर रु आसीबो. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रो सेकंड दीटा लेटर स्पेसीज रो फर्स्ट दीटा लेटर आसीबो. स्पेसीज के कोलाई कोलाई रो फर्स्ट लेटर CO एंड आर होची स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया. बैक्टीरिया मानकर स्ट्रेनिंग प्रोसीजर करा जाय बा तुमरो बहुत सारा गोटे बायोटेक्नोलॉजी रो स्ट्रेनिंग प्रोसीजर करा जाय. देन आई होची नंबर ऑफ स्ट्रेन. चलो बढ़िया अछि समस्त ठीक अछि. चलो नेक्स्ट जिबा फॉर मेकिंग द genetically modified organism the 3 basic steps that are required. कोन हबो सुदीप्ता. एथरो जदि हमें देखिबा 11th और 12th भितरु तो बेसिकली मु कहूची तुम फोकस करिक जाओ 12th को फोकस करो मैक्सिमम 12th को फोकस करो. 12th को प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी 12th प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी. चलो कौन आंसर अमाजिंग कृष्ण डी. समस्त आंसर डी. हमें जानिछे फॉर द मेकिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म द 3 बेसिक स्टेप्स. तीनटा बेसिक स्टेप्स दरकार हमकु. फर्स्ट होचे आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विथ डिजायर्ड जीन बा हमर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट बा डिजायर्ड जीन जोटा तो ताको आइडेंटिफाई करिया पे हम आइडेंटिफिकेशन डीएनए करिया पड़िबो.
इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफिकेशन डीएनए टू द होस्ट, डीएनए होस्ट बॉडी रे एंट्री करिया अछि, मेंटेनेंस द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए इन द होस्ट, ऑल ऑफ द अबव. चलो, who isolated antibiotic resistance gene from salmonella typhi in 1971? प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी दैट इज बाहर करथिले किए किए दैट इज कोहेन एंड हर्बस, स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर, who isolated antibiotic resistance gene from the salmonella typhi. And most important प्रथम रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी किए बाहर करथिले स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर. जैकब एंड मोनट कौन बाहर करथिले? एनीवन? जैकब एंड मोनट कौन बाहर करथिले? लैकप्रन. हला व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? एनीवन? व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? श्रद्धा स्निग्धा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्वेश्चन है. थैंक यू. इट्स ओम. अनिल, सॉरी अनिल लिखि नथि मे भी. स्नेहा तमरो टोटली ऊपर जहां भी अछि मार्क ता कहिल कि लास्ट 5 मिनिट दबा तो सेथरे तुम पचार दबो हला. तो कौन हबो व्हिच रिकॉम्बिनेंट डीएनए होची कोन ना हमर जीन ऑफ इंटरेस्ट बा जनरली हमकु जो जीन दरकार जीन ऑफ इंटरेस्ट बा डिजायर जीन प्लस वेक्टर. वेक्टर माने प्लाज्मिड को यूज कर परिया वेक्टर आकारे. सो दैट इज कॉल्ड एज जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अच्छा मते को कि जनरली टीआई प्लाज्मिड is a vector which is used for the plant cell and animal cell. TI plasmid is a vector which is used for the plant cell or animal cell. Artificial DNA form with the combination of 2 or more gene sequence. Plant and हमें जानी छे plant case रे generally dicot plant को affected करे गोटे bacteria that is called as Agrobacterium tumefaciens. तो यही जो बैक्टीरिया रहला एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियंस नामक बैक्टीरिया डाइकोट रे कोन करे ना ट्यूमर इंड्यूस करे. तो से एग्रोबैक्टीरियम टूमीफैसियंस बैक्टीरिया रो प्लाज्मिड को जनरली हमें कहूचे टीआई प्लाज्मिड. आ टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर द प्लांट. 100 थरो नीट रे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पचारची, ओयूट रे पचारिया चांसेस भी अछि. दैट इज स्ट्रिक्टली मन रखिबो टीआई प्लाज्मिड इज यूज्ड फॉर द प्लांट. सो जदि हमें क्वेश्चन पचारि तुमको बैक्टीरियोफेज plasmid, bacteriophage, plasmid and TI plasmid and the retrovirus. Which one is important for the animal cell? Animal cell ପାଇଁ कोटा? Animal cell ପାଇଁ. सर मे फेयर पाखरे आपण रुहंती की ना मे फेयर नो नयापल्ली बाकी मे फेयर पाखरे नो मे फेयर पाखा बाकी हो ए 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर. चलो retrovirus is used for the animal. चलो बढ़िया. नेक्स्ट इबा अरेंज द फॉलोइंग प्रोसेस इन द सीक्वेंस. टोटल हमर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी रहला अरे सीक्वेंस कोन? बढ़िया क्वेश्चन एटा हला. प्रथमे कोन करिया मु तुम ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप कहि देछि. प्रथम स्टेप होची कोन ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए. चलो कृष्ण फ्लोरी एंड चेन मो फोन रे बोते टिके लेट रे शो होछ तुम कमेंट. सर मु युवदय रे पढुतली त्रिदेप्त. ओके बढ़िया जाओ. सर कहतु केवल आपण देखो इट्स होम आमे गोटे प्रेडिक्शन लगे परिया. मु जति क्वेश्चन दोची तो आमे तो गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कशन करूचे बट आमे 100% कहि परनी कि केवल एई क्वेश्चन एग्जाम रे पडियो बोली. तो निहात रूपे आगो कांसेप्ट ठीक जानिया दरकार यार. आमे तो डायरेक्ट क्वेश्चन को घोषि कि तो जाई परियानी ना एई क्वेश्चन गुडा को. ओके तो कोन ऑफ आंसर? प्रथम प्रोसेस होची हमर कोन ना आइसोलेशन ऑफ डीएनए. प्रथम स्टेप होची डीएनए को आइसोलेट करिया. आ जोटा मु तुम प्रोसेस कोन कहि डीएनए को आइसोलेट करिया पई सेल वॉल को डाइजेस्ट करिवो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करिवो, आरएनए को डाइजेस्ट करिवो, प्रोटीन को डाइजेस्ट करिवो, केवल डीएनए को आइसोलेट करिवो. प्रथम स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए. वेयर इज द ऑप्शन 1? तो ए ऑप्शन ता कटिला. देन तापर कोन करिवो डीएनए को आइसोलेट कला परे दैट इज सेकंड स्टेप हमर कोन आसीबो? समस्या का आंसर ए. That is second step होची isolation of desired DNA fragment. Desired DNA fragment को हमें जानिया. Then कौन करिबा? That is fragment of DNA. DNA fragment कला पर isolation of desired DNA. Second होची DNA को isolate कला पर DNA को fragment करिया by the restriction enzyme. तापर isolation of desired gene. Then हम कौन करिबा? Ligation of DNA fragment into the vector.
vector रे ligate करिया then transfer करिया recombinant DNA into the host तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन ए चलो हैला ओके ताले ये स्टेप हैला प्रथम होची कोन ना तमरो डीएनए को आइसोलेट कलो देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को देलो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कोन कला डीएनए को फ्रैगमेंट कला पर कोन ना से फ्रैगमेंट रो तमरो आइसोलेशन कलो जीन को आइसोलेट कला परे दैट इज कोन कलो ना दैट इज वेक्टर रे लाइगेट कलो सपोज दिस वन इज द वेक्टर सहित लाइगेट कलो सपोज जतले वेक्टर रे लाइगेट कलो ताकू हमें कहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट बॉडी भितरु एंट्री करबो एटा जे प्रोसेस चला नेक्स्ट जीवा मॉलिक्यूलर ग्लू का को जाय व्हिच इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर ग्लू एनीवन मॉलिक्यूलर ग्लू का कहया अनिल लाइगेस आशीष सार्थक मॉलिक्यूलर ग्लू इज कॉल्ड एज लाइगेस परफेक्ट डीएनए लाइगेस बढ़िया अछि चलो नेक्स्ट which match is correct for the enzyme which is used to extract the DNA in fall छाड़ दियो fall कोन generally which match is the correct matching करो plant cell पई कोन animal cell पई कोन बड़ा इजी क्वेश्चन एते कम पिला जी कोन पिला माने सब कोडे जाई जंती 120 वाचिंग ओनली एंड लाइक 78 ओके चलो 150 प्लस पिला जॉइन करंती बाकी मैक्सिमम पिला जेते एग्जाम पाखा पाखा आसु जी पिला मानकर सीरियसनेस एते बढ़ी जाउची चलो कोन हो व्हिच इज करेक्ट प्लांट सेल पई सेलुलोज तो करे बैक्टीरिया पई लाइसोजाइम काइटिनेज एंड ऑल द करेक्ट नेक्स्ट आंसर कोन हो 38 रो ऑल ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट ताले मते को कि जदि हम एटी कहिया तो टियर रे हमर जो लाइसोजाइम थाए टियर रे लाइसोजाइम थाए एटा गोटे को बैरियर फिजिकल बैरियर ना फिजियोलॉजिकल बैरियर कोन हो फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर ना सेलुलर बैरियर ना साइटोकाइनिन बैरियर कोन हो आंसर दियो व्हिच टाइप ऑफ बैरियर इज लाइसोजाइम टियर फ्रॉम द लाइसोजाइम कोन ऑफ आंसर फिजियोलॉजिकल बढ़िया यार समझ परफेक्ट देन मते को कि स्किन इज स्पेसिफिक टाइप ना नॉन स्पेसिफिक टाइप माने किछि स्पेसिफिक जिंस असले स्किन ता को अटकेबो ना नॉन स्पेसिफिक आंसर इज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्किन ता होछ गोटे नॉन स्पेसिफिक तो फिजिकल बैरियर फिजियोलॉजिकल बैरियर मते को कि न्यूट्रोफिल्स आ मोनोसाइट ये को बैरियर जीवो फिजिकल बैरियर ना फिजियोलॉजिकल बैरियर ना सेलुलर बैरियर ना साइटोकाइनिन बैरियर को न्यूट्रोफिल्स या मोनोसाइट नॉन स्पेसिफिक बढ़िया सर आईसीआर कम मार्क रखले ओयूट आईसीआर कम मार्क रखले केमथि हबो भलो मार्क रखले ही हबो सेलुलर बैरियर नॉन स्पेसिफिक होची स्किन न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट होची दैट इज न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट होची सेलुलर बैरियर तापर मते को कि इंटरफेरन virus infected cell secrete interference it is a cytokinin barrier na cellular barrier na physiological barrier na physical barrier कोन हो के जन का आंसर कोन हो interferon virus infected cell secrete interference is a physical na physiological na cellular cytokinin answer is cytokinin बढ़िया चलो तो ये रिलेटेड बैरियर रिलेटेड आसीबो तापर मते को जनरली को फंगी को हमें कहि परिया imperfect fungi ए फंगी को नेकी जदि हम क्वेश्चन पचरिया which fungus is called as imperfect fungi का कहया which fungi is called as imperfect fungi second question true sexual stage कहार मिलेनी को फंगी रो true sexual stage मिलेनी थर्ड क्वेश्चन जदि कहबा morels और truffles generally examples of which fungi देन जो देखिबा मशरूम टा को फंगी रो एग्जांपल को आंसर तो फर्स्ट आंसर कोन हला imperfect फंगी रो आंसर होची ड्यूटेरोमाइसिटिस
and आम जानी that is a fungus or fungus are classified into Phycomycetes, Ascomycetes, Basidiomycetes, Deuteromycetes. So here imperfect fungi is Deuteromycetes. Perfect. Second question, true sexual stage kahar मिलेनी same Deuteromycetes बा imperfect fungi ताको हमें काहे कहूचे because the true sexual stage is absent. Morels और trophils kahar example, Morel trophil kahar example, mushroom टा होची Basidiomycetes, Morels और trophils Ascomycetes, right? Ascomycetes होची Morels और trophils जहा को हमें खाई परिया. Morels and trophils are edible in nature, edible, and it is example of Ascomycetes. What is okay? Then mushroom टा होची Basidiomycetes. Then मते को कि from Ascomycetes, Basidiomycetes, Phycomycetes, which one is called as the bracket fungi or club fungi? Bracket fungi or club fungi क्या हो गया? Bracket fungi or club fungi क्या हो गया? आंसर दियो. बढ़िया समझती करो Basidiomycetes. Then algal fungi क्या हो गया? Algal fungi. Algal fungi क्या हो गया? Algal fungi. Algal fungi कौन बा आंसर? Algal fungi होची Phycomycetes. बढ़िया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. Which of the following used to check progress of restriction row? PCR stands for, what is the PCR stands for? 41. PCR stands for कौन हो? PCR stands for सर जनरल कास्ट रे केते मार्क इट्स होम. जनरल कास्ट कैटेगरी पाई बेसिकली तमरो सब मार्क डिपेंड करिवो 10th एंड +2. तो लास्ट बेल को तुम 10th एंड +2 रो मार्क दियो तो मु तुमको कहि देबी. सर आम घर नयापल्ली रे ओम प्रकाश राजपूत. ओके ओम प्रकाश. चलो कौन हम पीसीआर. पीसीआर प्रूफ होची पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पीसीआर इंक्लूड्स डिनेचुरेशन, एनिलिन एंड एक्सटेंशन. मन रखिबो हला डीएई स्टेप होची पीसीआर रो डीएई. नेक्स्ट जीवा 3 cycle of PCR amplified DNA approximately how many times? NCERT question 43. 3 cycles of PCR amplified DNA approximately how many times? 1 million times, 1 billion times, 100 times, 1000 times. कौन हो? सिप्रा A. 42D. 42 43 रा आंसर दियो. 43 समझते करो A. 1 billion times. Okay. 1 billion times. चलो नेक्स्ट जीवा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कल्चर दैट इज बायोरिएक्टर दरकार नहीं. नेक्स्ट जीवा ओके एटा तो कले हम स्टेप टा जेनेटिक मटेरियल. हां इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स द जेनेटिक मटेरियल इज. मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम मानकर जेनेटिक मटेरियल कोन? मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम मानकर जेनेटिक मटेरियल कोन? कोन आंसर? मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम मानकर जेनेटिक मटेरियल. मेजॉरिटी ऑर्गेनिजम मानकर जेनेटिक मटेरियल कोन? मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम मानकर जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए. परफेक्ट. चलो बढ़िया अछि समस्त आंसर. देखो एबे जो एग्जाम अल्प दिन जो रहिला तबे माने बेसिकली ट्राई करे कि सब बेले पई जेति कि चैप्टर पढी जाओ, जेति कि चैप्टर पढी जाओ ताकू भलसे पढिया पई. कहीं ना नुआ नुआ चैप्टर टू स्टार्ट करिया ठारू 100 गुना भलो होची जेति चैप्टर पढिछ तो सेगोडा को भलसे पानी करिया पे. जेते रिवीजन करिवो सकाळ उठी कि भलसे सेगोडा मन रहइबो. एई टाइम रे जमा ट्राई करी कि सकाळ टिके जल्दी उठी कि पढिया पे. तो बेसिकली सेटा बहुत इंपोर्टेंट हो. ट्राई करो दिन को गोटे ओटे जदी हम ओटे सिंपली गोटे जस्ट टिके ओटे रफली कहिया तो निहात रूपे हम ट्राई करो 60 टा केमिस्ट्री क्वेश्चन, 60 टा फिजिक्स क्वेश्चन, 100 प्लस बायोलॉजी क्वेश्चन. एति कि निहाती टारगेट करो दैट इज 60 60 120 200 220 टा क्वेश्चन दिन को टारगेट करो निहात रूपे. स्नेहलता सुबुद्धि लास्ट को कहि देबी कि तम परसेंटेज हैला
तो निहात रूपे ट्राए करो कि एतिकी करिया पई केमिस्ट्री 60 टा क्वेश्चन, ऑर्गेनिक, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री सेमती फिजिक्स तुम स्टार्ट करो से बेला दैट इज जो चैप्टर उडा तुमरो अछि स्ट्रैटेजी वीडियो विद्यासागर क्लासेस रे ऑलरेडी अपलोड होईची कि को ईयर रे केते केते क्वेश्चन उडा को चैप्टर आसी तो ताकू देखि कि तुम एनालिसिस करि परियो को चैप्टर वेटेज केते तो से अनुसार तुम सपोज फिजिक्स रो ऑप्टिक्स कलो कि सपोज तुम दैट इज द जेमति कि लॉज ऑफ मोशन कलो कि जो चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स कलो कि मैग्नेटिज्म कलो कि वेव ऑप्टिक्स कलो तो से सब जोड़ा वेटेज अछि चैप्टर ताकू ଟିକେ देखि करो एंड केमिस्ट्री दैट इज वेटेज चैप्टर उडा देखि करो ऑलरेडी स्ट्रैटेजी जो तमर वेटेज चैप्टर अपलोड हेजी सो सेगुडा को हेजिवो एंड ताकू भल से प्रैक्टिस करो हबो हला आ बायोलॉजी ट्राई करो दिन को 100 टा लेखा क्वेश्चन करिया पे ओके चलो नेक्स्ट जीवा in isolation of genetic material DNA from the nucleus the RNA can be removed and protein by the protease the purified DNA then precipitates after the addition of and this is the important direct line question chemistry रो क्वेश्चन करूनी केमिस्ट्री हार्ड लागुची देखो हार्ड लागिला कोन करा जो हम तो करिया ही पड़िबो चिल्ड इथानॉल बढ़िया आंसर होची 39 रो चिल्ड इथानॉल perfect that is the chilled ethanol next question हम कले बे next जीवा recombinant DNA is 50 question देखियो what is recombinant DNA is chimeric DNA hybrid DNA recombinant DNA vector and DNA desired gene कोन हबो recombinant DNA is chimeric DNA and both A and C same कथा है chimeric DNA बा A and C foreign DNA is also called as vehicle DNA, recombinant DNA, passenger DNA, na vector DNA. Foreign DNA is also called as sorry, कौन हबो आंसर foreign DNA is also called as D vector DNA. चलो नेक्स्ट प्लाज्मिड आर जनरली प्लाज्मिड मानकर कोन डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मो ऑलरेडी तुम कहली plasmid is extra chromosomal circular DNA of bacteria extra plasmid होची extra chromosomal circular double stranded DNA ताला आंसर कोन हबो डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर हैला भोसी पूरा मन रखो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए बढ़िया अछि एमडी कौशर त्रिदेव अविनाश तारिणी शंकर आईसीआर कॉलेज ट्रांसफर से रिगार्डिंग रे देखिया पड़ियो टिकी कार्टून स्नेहलता नरहरि इट्स ओम सार्थक अंकिता राजलक्ष्मी श्रिया चिन्मय कहिया अमित कहिया तमरो लक्ष्मी श्रद्धा स्निग्धा क्रिक ब्रो देवज्योति राजेश रवि निवेदिता सुब्रत ओके चलो नेक्स्ट बा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक जो गोटे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहिला तो जनरली जो रिकॉग्निशन स्पेसिफिक हमें कोन कोचे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इजी क्वेश्चन कोन अछि आर आंसर कोन हो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस PBR322 इज द एक्सटेंसिवली स्टडी इन प्लाज्मिड डीएनए इक्वली फॉरेन डीएनए ना प्लाज्मिड डीएनए ऑफ इक्वली ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना फॉरेन डीएनए ना क्लोन कहार आंसर दो क्वेश्चन टा ए रवि नारायण पचारो restricted enzyme recognition specific palindromic sequence and PBR32 is the most extensively studied recombinant DNA PBR32 टा होची वेक्टर डीएनए टा जोटा मैन मेड डीएनए टा प्लाज्मिड डीएनए ऑफ इक्वली ना रिकॉम्बिनेंट डीएनए ना फॉरेन जीन ना क्लोन कोन हबो यार आंसर दियो PBR32 टा आंसर दियो 53 रा आंसर दियो A that is पचार अनिल कोन जनरली ट्रांसफॉर्मेट माने कोन जदी कोनोसी वेक्टर डीएनए विदाउट एनी जीन ऑफ इंटरेस्ट बिना जीन ऑफ इंटरेस्ट रे जदी डायरेक्टली वेक्टर डीएनए टा गोटे सेल भितर को एंट्री करि जाउची बा कोनोसी एंटीबायोटिक भितर एंट्री करि जाउची दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट टा कोन जनरली सेल भितर को विदाउट द जीन ऑफ इंटरेस्ट न थाई पारे एंड आइदर ट्रांसफॉर्मेंट टा हेई पारे
with gene of interest हे पारे and transformants without the gene of interest भी हे पारे और non transformant माने डायरेक्टली तो सेल भीतर को आसी नथिबो एंड सेल को हमें कॉम्पिटेंट करिया को पड़े काटायन सॉल्यूशन देकिरी बा कैल्शियम रे देखियो चलो नेक्स्ट कोन हबो द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम इकोली स्यूडोमोनास हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जैंथोमोनास कोन हबो that is what is the first restriction enzyme was isolated from prathama restriction enzyme isolated from कोन कार गोटे थिला रोप होची that is रोप होची रिप्रेसर ऑफ प्राइमर जोटा कि कॉपी नंबर ऑफ प्लाज्मिड को कंट्रोल करे चलो तो रेस्ट्रिक्शन फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हमें जानि छे जेतु प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होची हिम टू so answer is hemophilus influenza restriction endonuclease is a enzyme for the transcription enzyme for replication molecular blade कोन आंसर देखो ठीक है स्पीड करिया अलगा क्वेश्चन को जिया क्वेश्चन ओडा बहुत कलेने तो आंसर कोन हबो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा जेहेतु प्रथम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज इज हिट टू देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज इज ए मोलिकुलर ब्लेड बी ऑप्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऑफ इकोली रु बाहर थिबा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रा आंसर कोन हबो restriction enzyme from eco R1 and eco R2 ताले कोन आंसर हिंट टू तो नुह हिंट 3 टा होची हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा रु इकोली रु पचारची माने इको R1 and इको R2 चलो नेक्स्ट प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन एंडोसिम्बायोसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल बेस्ट वेक्टर डीएनए ना ऑल ऑफ दिस ऑब्वियसली ऑल ऑफ दिस द बेस्ट क्लोनिंग genetic engineering biotechnology equally agrobacterium pseudomonas lambdaphase agrobacterium hobo 59 plasmid are extra nuclear gene of bacteria na based vector dna na endosymbiosis kon answer total a b c all of the above then the best cloning organism for the genetic engineering biotechnology kon hobo equally next बैक्टीरियोफेज आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी जनरली बैक्टीरियोफेज को बायोटेक्नोलॉजी रे यूज करा जाय कोन पई देखो बैक्टीरियोफेज कैन एक्ट लाइक ए 2019 रो OUT बुक स्टडी कले हबो कि हां हबो किछ नै हबो बैक्टीरियोफेजेस आर यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी आज जनरली बायोटेक्नोलॉजी रे बैक्टीरियोफेज को यूज करा जाय कोन वेक्टर और वेक्टिल डीएनए पे यूज करा जाय देखो काई कहलो जनरली तमे एटे भाबुथिबो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंथेसाइजर भी करियबो बिकॉज़ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिंथेसाइज करे पे यार भूमिका रहउची काई कि ना जतबे बैक्टीरियोफेज जनरली ओटे बैक्टीरिया को अटैक करची तो बैक्टीरियोफेज रो डीएनए टा बैक्टीरिया भीतर आसी सो टू प्रिवेंट द वायरल डीएनए द बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सो दीटा ऑप्शन हे परिबो ए एंड सी हे परिबो हला दैट इज हां OUT रे बुक रे टिके बहुत सारे जिंस रॉन्ग थाए मु भी देखि छी हला किताब महल यूज करले चलिबो इट्स होम जो भी तुम बुक प्रैक्टिस करछो करो बेसिकली उच कांसेप्ट तुम जानिथिबा दरकार हला एंड ए टाइम भीतर तुम ट्राई करो कि जो चैप्टर ओडा तुम सरीनी सेडा टिके पढिया पई पानी रे सिको जे क्वेश्चन सइला एडा सरी छी इंजीनियरिंग बैक्टीरिया क्यारी द फास्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सरी छी इंजीनियर बैक्टीरिया छाड़ दियो द एबिलिटी टू फॉर्म ट्यूमर ओंकोजेनिक एटी देखो द एबिलिटी टू फॉर्म ट्यूमर्स इज फाउंड इन प्लाज्मिड जनरली हमें एबे पढितले कि प्लांट मानन केस रे उटे वेक्टर को यूज करे जे दैट इज टीआई प्लाज्मिड एटा पढिला में एंड टीआई प्लाज्मिड ता जनरली को बैक्टीरिया से एग्रोबैक्टीरियम टूमिफेसियंस तो जनरली बैक्टीरिया ता कोन करे ना डाइकोट प्लांट जो रहले तो डाइकोट प्लांट रे दैट इज ट्यूमर इंड्यूस करदी so that the ability to form the tumor this is form tumor is कौन से लिखा है छाड़ दियो प्लाज्मिड और इक्वली एग्रोबैक्टीरियम स्यूडोमोनास न्यूमोकोकस कौन हबो यस हरिहर यस कितने थरा पचारछ हरिहर एग्रोबैक्टीरियम चलो इंजीनियर्ड बैक्टीरियम क्यारी इंजीनियर बैक्टीरिया बा जो बैक्टीरिया रे तमे रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंट्री करूछो जो बैक्टीरिया रे तमे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एंट्री करिया चाहूछो
सो इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कैरी कौन कैरी करछि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हला रिकॉम्बिनेंट डीएनए चलो चलो कौन हम आंसर नेक्स्ट engineered bacteria are reproduced by inserting engineered bacteria टा generally reproduce करूची by inserting कौन हबो engineered bacteria are reproduced by inserting plasmid DNA ना desired gene of interest with vector DNA ना कौन हबो आंसर इज B चलो क्लास 12th रो इंपोर्टेंट चैप्टर जो तुम देखियो बायोटेक्नोलॉजी इंपोर्टेंट सेकेंड जो तुम देखिबो दैट इज जेनेटिक्स रो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इवोल्यूशन रिप्रोडक्शन इकोलॉजी इंपोर्टेंट आ सबुठारो अधिक इंपोर्टेंट होची इकोलॉजी को पढ़ो सहज क्वेश्चन पढ़िबो इकोलॉजी को भलसे पढ़ी के सारो देन होची रिप्रोडक्शन रे सहज क्वेश्चन इजी क्वेश्चन देन होची आ याको तो पढ़िया पड़े बायोटेक्नोलॉजी रे सहज क्वेश्चन हैला एते भी क्रिटिकल क्वेश्चन न आमाजी कृष्ण थैंक यू ओके चलो नेक्स्ट जीवा चलो प्रथम 137 वाचिंग ओनली oncogenic character is seen in generally oncogenic character is seen in कौन हबो oncogenic माने कैंसर रिलेटेड आसी ट्यूमर रिलेटेड तो कौन हबो को बा ट्यूमर रिलेटेड आसी तो कौन आंसर टीआई प्लाज्मिड हमें जानि छे टीआई प्लाज्मिड रिलेटेड आसला माने oncogenic 141 वाचिंग एंड हमें ट्राई करिया नियति 150 प्लस करिया पे सॉरी ताले ओंकोजेनिक कैरेक्टर ओंकोजेनिक होचे ट्यूमर रिलेटेड हमें जानि छे कैंसर कॉजिंग वायरस को हमें कहचे ओंकोजेनिक वायरस बोली भी कहचे एंड ओंकोलॉजिस्ट कहचे जो माने जनरली ओंकोजेन बा कैंसर को डायग्नोसिस करछथि से माने ओंकोलॉजिस्ट बोली कहचे ओंकोलॉजी डिपार्टमेंट जेम हमें मेडिकल गला बेले तो ओंकोजेनिक कैरेक्टर हमें जानि छे डाइकोट प्लांट मानो केस रे ट्यूमर इंड्यूसिंग जो बैक्टीरिया रहला एगरोबैक्टीरियम तो एगरोबैक्टीरियम जो बैक्टीरियम रे आसीला प्लाज्मिड दैट इज कॉल्ड टीआई प्लाज्मिड सो रिलेट कर परिबो मते कोइ कि जनरली हमें जानि छे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्यूमर गोटे इज बिनाइन ट्यूमर एंड अनदर वन इज malignant ट्यूमर कोइ कि जनरली बिनाइन ट्यूमर और malignant ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर एंड malignant ट्यूमर को ट्यूमर ता जनरली हम भलो करि परिने बा ब्लड द्वारा स्प्रेड हुए बाय द स्प्रेडिंग नेचर को ट्यूमर थाए बिनाइन ट्यूमर ना malignant ट्यूमर कोन आंसर बिनाइन ट्यूमर एंड malignant ट्यूमर दैट इज को ट्यूमर रो स्प्रेडिंग नेचर थाए दैट इज malignant ट्यूमर जस्ट गोटे व्यू दबा फॉर एग्जांपल हमर प्रत्येक सेल रो गोटे प्रॉपर्टी थाए सपोज दिस इज ए सेल एंड एवरी सेल रो गोटे प्रॉपर्टी थाए कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी व्हाट इज कांटेक्ट इनहिबिशन ता पाखो सेल को से गोटे सिग्नल दिए कि मु जेति ग्रो करछि तते भी सेति ग्रो करेर अछि कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी तो जनरली कोन हुए ना जेतो बळे गोटे सेल जेतो फर्स्ट अफेक्टेड हुए तो जनरली तार कांटेक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी लॉस हुए जहा फल रे कोन होबो ना पाखो सेल रो से सराउंडिंग सेल रो दैट इज कोनोसी इंफॉर्मेशन पाई परिबोनी कि मते एतिक लेवल रे ग्रो करेर अछि सो ए सेल टा मोर एंड मोर दैट इज रैपिडली प्रोलिफरेट ग्रोथ करी करी चलिबो दैट इज कोन करिवो ना द एब्नॉर्मल ग्रोथ होबो जा को हम ट्यूमर बोली कहि परिया ट्यूमर आर टू टाइप्स कोटा होची बिनाइन ट्यूमर एंड अनदर वन इज malignant ट्यूमर एंड malignant ट्यूमर टा जनरली ब्लड थ्रू रे गोटे जगह स्प्रेड करे and the spreading nature of the malignant tumor is called as spreading nature of malignant tumor spreading nature of malignant tumor को हमें जनरली कौन कहि परिया spreading nature of malignant tumor is called as metastasis what is metastasis जो कैंसर रो स्प्रेडिंग नेचर टा मेटास्टासिस बढ़िया शुभलक्ष्मी परफेक्ट मेटास्टासिस देन मते को कि इंक चेंज कर दो प्रीति जस्ना ओके तो मेटास्टासिस गला देन हमें कहया प्रथम गला मेटास्टासिस ओके देन मेटास्टासिस देन सेकंड देखिबा व्हाट इज मेटाजेनेसिस कोन व्हाट इज मेटाजेनेसिस को मेटास्टासिस गला तो स्प्रेडिंग नेचर ऑफ द malignant ट्यूमर देन व्हाट इज मेटाजेनेसिस होची सिलेंटरेटा विजयलक्ष्मी परफेक्ट मेटाजेनेसिस होची सिलेंटरेटा जो रहिला हमर अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन बा दीटा जेनरेशन चेंज हुए पॉलीप्रोडूस मेडुसा
polyp and medusa. Polyp produce medusa asexually, medusa form polyp sexually, alternation generation, metagenesis. Then को कि metamerism कौन? What is metamerism? What is metamerism? Metamerism कौन? Answer दियो. Metamerism कौन? Alternative generation perfect. 11th रो important chapter होची plant physiology, animal physiology. एबे पाई तो एतिकी पढ़ो. और टाइम नहीं, ये दीटा चैप्टर पढ़ो भलो से. All that is metamerism कौन? Body segmentation. सुशांत विजयलक्ष्मी बढ़िया. मेटाजेनेसिस होची कौन? बॉडी सेगमेंटेशन. बॉडी सेगमेंटेशन एंड बॉडी सेगमेंटेशन किए शो करिवो हम जानि छे. कलर टिके चेंज कर दबा. एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोडाटा. एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडाटा. ठीक अछि. ए सी एमान होची मेटामोरिज्म शो करन. देन व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? लास्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस को. मेटामॉर्फोसिस कौन? सब मेटा रिलेटेड जहाँ अच्छे पूरा डिस्कशन. मेटामॉर्फोसिस कौन? या पायल राइट. फेनोमेना ऑफ हैविंग द लिनियर सीरीज बॉडी स्ट्रक्चर को. देन आंसर दबा कौन? दैट इज मेटामॉर्फोसिस कौन? मेटामॉर्फोसिस को आंसर कौन हो? मेटा किसी भी फॉर्म का कंप्लीट चेंज होना. दैट इज हम जानिछे जते बेंगो मानकर जो लार्वाल स्टेज रो एडल्ट स्टेज को होंदी बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. बा गोटा कंप्लीटली लार्वाल स्टेज रो एडल्ट स्टेज को कन्वर्सन होवा पय जो प्रोसीजर टा हुए, जो जेमति फॉर लाइक कॉकरोच केस रे हुए एंड फॉर द फ्रॉग बना केस रे हुए, दैट इज कॉल्ड एज हमरो दैट इज मेटामॉर्फोसिस. सो क्लियर. एम रिलेटेड केतरा टर्म मन रखिलो? मेटाजेनेसिस, मेटामोरिज्म, मेटास्टासिस एंड मेटाजेनेसिस. ओके चलो नेक्स्ट बा. broken end of the two DNA strands are joined by which of the following is not a vector? Transgenic plant are inserted by the देखो 65 क्वेश्चन तो आसीओ चुटकी रे क्वेश्चन. Transgenic plants are produced by inserting PI plasmid. Which of the is not a vector for recombinant DNA technology रे vector कोटा नो? मस्क्यूटो रो. Broken end of two DNA strands are jointed by DNA ligase. Next iba. Okay, को आसो. स्टूडेंट्स तुमको मुरली सर किछि गोटे ड्रामेटिक चेंज इन द फॉर्म ऑफ द हैबिट्स परफेक्ट. दैट इज द ड्रामेटिक चेंज को हमें कहि परिया मेटामॉर्फोसिस. मुरली सर तुमको किछि इंफॉर्मेशन देबे. सो मुरली सर डाकिया गोटे मिनिट. तो डिस्ट्रैक्शन मझिरे आसुची 1 मिनिट रो. मुरली सर आसो प्लीज. गुड इवनिंग एवरीवन. तो डिस्ट्रैक्शन तो नुह तम पे गोटे इंफॉर्मेशन कि जो मानकर +2 रिजल्ट बाहरी जाईची. +2 रिजल्ट जेतु काली डेट रे बाहरी जाईतला. पिलाकर बहुत गुला क्वेरीज अछि. तुम माने लाइव क्लासेस रे पचारुचो. तो लाइव क्लास भितरे पचारि बारे हमें ताकू रिप्लाई करि पारु नथि सर माने. तो तुम माने काली 12 टा रु गोटे. ठीक अछि. एट 12 pm काली पुनी गोटे लाइव सेशन अछि कैरियर काउंसलिंग ऊपर. तुम माने जॉइन करो. तुम संग मानको भी कहो जॉइन करिवे. एंड पिला भी सर आज पचारुतले कि सर हमर एतिक मार्क रहिला 94.9. हमर भी डाउट्स अछि जति मार्क रखिछो कोन रखिछो. हमें काली तम डाउट्स नै कि आसो दिन 12 टा रे. काली 12 टा रु हमर सेशन स्टार्ट हबो लाइव सेशन. जहां डाउट्स रहइबो हमें नो साउंड. एबे वॉइस आसिला. वॉइस आसुची एबे. आउथरे सर कोन भी सुना नै. एम आई ऑडिबल नै हूं? यस यस. ओके. तो मु कहतली कि तमरो काली 12 टा रे एट 12 pm तमरो आ गोटे लाइव सेशन रखा होची ऑन कैरियर काउंसलिंग. तो जो मानकर भी डाउट्स रही जाईची लाइव क्लास रे न पचारी कि आमे काली टू ताको काली पुनी आउतरे कैरियर काउंसलिंग करि परिबा. ठीक अछि. तो काली ठीक 12 टा रे तमे भी जॉइन करो. तम संगे जे जो माने तम संग माने अछंती जो माने चाहउचंती निज कैरियर विषय आ टके जानिया पई से मानको मध्य कुओ
से माने मध्य join विजुअल करिवे कैरियर मार्क 95 माने 95 तुमको 110 130 130 मार्क रखा है आराम से घर बस। तो लाइव क्लास रे डिस्कशन टा करबा नहीं ठीक अछि मुरली सर ड्रॉप्ड, कालिया सर सॉफ्ट। कालिया सर कोड आइले ठीक अछि तो कालिया सर ठीक अछि काली 12टा रे जॉइन करिवो समस्ते ओके। ह्यूमन फिजियोलॉजी तुम पाखरे इंफॉर्मेशन टिके ज्यादा थिबा दरकार एमते नाही कि डीप तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी रो अति डीप कांसेप्ट न चलले भी एटलीस्ट इंफॉर्मेशन टिके अधिक थिबा दरकार सब चैप्टर रो ओवरऑल इन्फेक्शन थिबा दरकार। कैरियर रे 99% ऑलरेडी फिजियोलॉजी हमरा आंसर दिया चलानी 95% कैरियर माने एवरेज परसेंटेज बहुत बढ़िया अछि। सो नियत रूपे तुमको मार्क धरिक चलो 125 प्लस से बडा 125 प्लस 30 प्लस। तो बाकी ये रहला क्वेश्चन डिस्कशन। तो तुमको 88 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन ये होची तुम भाई होमवर्क रहला हैला। तो ए तीनटा क्वेश्चन होमवर्क करो 88 89 90 91 चारटा क्वेश्चन तुम होमवर्क रहला। तो जेतिक जण पिला देखुचंदी तांका भितरु मु देखे प्रीवियस जेमती देखिले हम वीडियो रे प्रीवियसली पिला जेमती कि हमर थिले पिला लाइक दैट इज कमेंट करछंती एंड पिला माने कमेंट रे थिला कहा ना सब थिला। तो आई थिंक जे देखिबा सुप्रिया थिला सोहन थिला देन शुभलक्ष्मी एई टाइप रो। तो तमे दैट इज ट्राई करो कि 88 क्वेश्चन 89 क्वेश्चन 90 एंड 91 एति कि चारटा क्वेश्चन कमेंट रे दियो एंड नेक्स्ट क्लास रे काली ट्राई करिया ह्यूमन फिजियोलॉजी रो मोस्ट इंपोर्टेंट आनिया पई कि एनी गोटे चैप्टर देखि कि आनिया पई ठीक अछि। 120 200 रो आनिले सालोनी वेटनरी हबो नाही वेटनरी पई नो वेटनरी पई ताले तुम जदी सेति कि 95% आसी तो वेटनरी पई नियति 135 140 प्लस आनो कैरियर 95 माने बहुत अछि। एवरेज 75 माने तुम बहुत मार्क रखिया पड़ियो 160 प्लस। सर मार्क केते टोटल 200 एंड नो नेगेटिव मार्क ओके ठीक अछि। तो एठी हम लाइव को एंड करिया जहार भी जहा क्वेश्चन अछि। तो नीतिका 11th रो मोस्ट इंपोर्टेंट प्लांट फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी जहार जहा डाउट रहला तो हमें ट्राई करिया कि काली जो हमरो लाइव सेशन होबो 12टा रे श्योर अनिल सो 12टा रे जो लाइव सेशन होबो सेते जॉइन करा एंड जहार जहा क्वेश्चन अछि से रिगार्डिंग रहइबो एंड जो माने फॉर्म बी फिल अप करिनो इमीडिएटली फिल अप करि दियो। ऑलरेडी फॉर्म बी फिल अप होरा प्रोसीजर टोटली पर वीडियो अपलोड हेई सारिची विद्यासागर क्लासेस रो वीडियो सेक्शन जाई देखि परिबो एंड जो माने दैट इज जो माने भी फॉर्म बी अप्लाई करना एंड ड्रेस कोड रिलेटेड जहां भी जहां इंफॉर्मेशन अछि सब अपलोड हेई सारिची तुम माने जाकी देखि परिबो ठीक अछि। चलो काली जहां भी जहां डाउट अछि समस्त पचारिबो एंड मु सॉरी कि सब बहुत प्रकार क्वेश्चन देखुची बट आंसर देई पाउनी जेहेतु एबे आउट लाइव सेशन अछि। सो इट्स ओम एंड स्नेहलता एमडी कौशर जागेशनी रोशन मिनती थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलो गुड नाइट। व्हाट्सएप नंबर हैप्पी क्राफ्ट्स कांटेक्ट करो जो नंबर रे से नंबर रो तुम व्हाट्सएप नंबर मिली जिवो।